अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि और आज के एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन अ टिपिकल बैक्टीरियोफेज। सो टिपिकल बैक्टीरियोफेज मीन याद रखिए मोस्टली जो वायरसेस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उसमें डीएनए होता है। सो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Second एमसीक्यू में इन बैक्टीरियोफेज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेल फाइबर। टेल फाइबर का काम क्या होता है, टेल फाइबर क्यों पाए जाते हैं, अटैचमेंट के लिए होते हैं। और अगर टेल फाइबर ना हो तो फिर अटैचमेंट जो है वो बेस प्लेट के जरिए से होता है, बेस प्लेट। और अगर बेस प्लेट पे ना हो तो तब कैप्सिड के जरिए से अटैचमेंट्स होती है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। एमसीक्यू थर्ड पे आते हैं, विच कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियोफेज हेल्प इन इंजेक्टिंग वायरल डीएनए इनटू द होस्ट सेल। सो टेल शीट जो होता है उसको यूज किया जाता है ताकि वायरल डीएनए होस्ट में इंटर्ड हो जाए। सो टेल शीट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या चीज है? नहीं, हेड में तो उसकी डीएनए पाई जाती है, हेड से वो पास होगी उसकी टेल शीट्स में, जहां से जो है वो एंटर होगी। टेल फाइबर को यूज किया जाता है अटैचमेंट्स के लिए, टेल शीट्स के जरिए से डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है और हेड के अंदर इसकी डीएनए एग्जिस्ट होती है। सो दिया हुआ है, विच कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज हेल्प इन इंजेक्टिंग वायरल डीएनए इनटू द होस्ट सेल। सो हेड का इसमें रोल नहीं है। सो इसको फिर फेज कहते हैं। जो वायरल कोट बाहर रह जाता है इसको फेज कहा जाता है। फेज से वो वायरस जो उसका बैरूनी पार्ट प्रोटीन कोट जो बाहर रह गया। एमसीक्यू 4 पे आते हैं, विच पार्ट ऑफ द बैक्टीरियोफेज कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। अब आपका जो वो था, आपने जो बोला था हेड, सो अब इस टाइम पे हेड इज करेक्ट। सो इसकी जो डीएनए है उसकी हेड कैप्सिड में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कैप्सिड्स इन बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का जो है उसमें कैप्सिड्स का कौन सा फंक्शन नहीं है। प्रोटेक्टिंग द जेनेटिक मटेरियल, ये तो इसका है। असिस्टिंग इन डीएनए इंजेक्शंस, ये भी इसका रोल है। इंक्लूडिंग वायरल डीएनए, ये भी इसका रोल है। डिटरमाइनिंग होस्ट स्पेसिफिसिटी, डिटरमाइनिंग होस्ट स्पेसिफिसिटी टेल फाइबर का रोल है, और या टेल जो बेस प्लेट्स है उसका रोल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिक्स दिया में बैक्टीरियोफेज आर बीइंग रिसर्च्ड एज एन अल्टरनेट टू, बैक्टीरियोफेज आर बीइंग रिसर्च्ड एज एन अल्टरनेट टू एंटीबायोटिक्स। Bacteriophage are being researched as alternate to vaccines, not antibiotics. So bacteriophage mean वायरस है, so वायरस के लिए वैक्सीन इस्तेमाल किया जाता है और बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे bacteriophage are being researched as an alternate to antibiotic ट्रीटमेंट इसलिए ठीक है क्योंकि ये वायरस इस बैक्टीरिया पे अटैक कर रहे हैं, ह्यूमन पे अटैक नहीं कर रहे। सो वो बैक्टीरिया जब बॉडी में, हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हम उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करेंगे, नॉट वैक्सीन। प्रोबायोटिक दही, वो चीजें जो कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया को रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह पे बेनिफिशियल बैक्टीरिया आ जाती है, इनको प्रोबायोटिक्स कहते हैं। दही, लस्सी, ये चीजें। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेवंथ दिया हुआ है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज क्या है? आर्टरी वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, या ये वो ब्लड वेसल है जो कि ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती है। सो दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 8, व्हाट इज द शेप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, स्फेरिकल या फिलामेंटस एनवेलप्ड वायरस है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 9, which two glycoprotein projects from the viral envelopes and are crucial for infection in release?
हमने पढ़ा है कि इन्फ्लुएंजा वायरस में 5 टाइप ऑफ प्रोटीन्स है, लेकिन 2 इसमें मेजर है, हीमोग्लूटानिन और न्यूरोएमिनिडेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10 दिया हुआ है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लूटानिन? हीमोग्लूटानिन का काम क्या है? बाइंड टू द होस्ट सेल्स साइलिक एसिड रिसेप्टर। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में साइलिक एसिड होता है, उसके साथ ये बाइंड हो जाते हैं, फिर साइलाइडेज जिसको न्यूरोएमिनिडेज कहते हैं वो रिलीज किया जाता है, होल बन जाता है, वायरस एंटर्ड हो जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 11 which labeled part of HIV structure is responsible for attaching to the host cell receptor CD4? कौन सा पार्ट जो है वो HIV के अंदर अटैचमेंट्स के लिए यूज किया जाता है? GP120 और पेनिट्रेशन के लिए GP41। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 12 what is the function of reverse transcriptase? Convert viral DNA to viral RNA to cDNA या complementary DNA। ऑप्शन ए is correct। 13 the part lipid envelope is derived from host cell membrane। ऑप्शन बी is correct। 14 the HIV genome consists of which nucleic acid? HIV में हमें पता है कि उसमें RNA, so वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। ऑप्शन सी is correct। 15 which enzyme is essential for integration of viral DNA into host DNA and is used by HIV? इंटीग्रेस का काम है। 3 एंजाइम्स है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेट, प्रोटीएज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो आरएनए से डीएनए, फिर इंटीग्रेस का काम है कि इसी डीएनए को होस्ट डीएनए के साथ अटैच कर ले। एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 16 व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स इन एचआईवी लाइफ साइकिल? एचआईवी लाइफ साइकिल 6 डिफरेंट स्टेजेस है। बाइंडिंग एंड फ्यूजन, reverse transcription, integration, transcription and translation, assembly and budding and maturation. Option B is correct। 17 during which stage does HIV incorporate its viral DNA into the host genome? During integration। Option B is correct। 18 HIV primarily infect which type of immune cells? CD4 helper cells। Option C is correct। 19 what happens during the budding stage of HIV life cycle? So the virus exists, the host is taking part cell membrane। So option C is correct। 20 what role does the HIV enzyme protein play in the viral life cycle? आप लोग को पता है कि वायरस में HIV में 3 एंजाइम है, जिसमें एक प्रोटीएज एंजाइम भी है। So वो जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसमें जो प्रोटीन बन गया उसको अरेंज करना, उसको असेंबल करना, वायरल प्रोटीन कोड बनाना यूसी में इस्तेमाल होता है। सो क्लीव्स वायरल पोलीप्रोटीन्स इनटू फंक्शनल प्रोटीन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 21 व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन। 22 व्हिच एंजाइम बिगिन प्रोटीन डाइजेशन इन द स्टमक? पेप्सिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 23 which gland produce insulin? Pancreas। Option A। 24 which part is primarily responsible for absorbing water from undigested food? Large intestine। Option D is correct। 25 which region of the stomach open into small intestine? Pyloric region portion। Option C is correct। 26 which organ carries out most digestion and absorption? Small intestine। Option A is correct। 27 which enzyme work best in acidic low pH environment? Proteases। एंजाइम के चैप्टर में दिया हुआ पीएच इसका 1 है। 28 which organ produce bile juice? Liver। Option C is correct। 29 what is the primary function of the digestive system? Break down food for the nutrient absorption। Option C is correct। 30 which enzyme in saliva break down starch into sugar? amylase का काम है। Option B is correct। 31 where does the digestion protein begin? स्टमक में बिगिन होती है, और अगर कार्बोहाइड्रेट होता तो हम माउथ लगाते। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 32 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बाइल? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट, और ये मैकेनिकल डाइजेशन में आता है, केमिकल में नहीं। 33 वेयर इज बाइल स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड? गॉल ब्लैडर में होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 33 में सी है। 33 में सी है। 34 पे आते हैं
The process of breakdown of food into smaller molecules is known as digestion. 36. Which enzyme is secreted by pancreas? 35. Which structure prevents food from entering the trachea during swallowing? Epiglottis. Option A is correct. 36. 35 में A. 35 में A. 36 पे आते हैं. Which enzyme is secreted by pancreas to digest protein? Trypsin. Option C. 36 में option C is correct. 37. The pancreatic juice is released into which part of the digestive tract? Duodenum. Option B is correct. 37. Option B is correct. 38. What is the role of pancreatic amylase? Digest carbohydrates. So 38 में हमारे पास है option C is correct. 39. Which hormone stimulates the pancreas to release bicarbonate-rich fluid? Secretin. So option B is correct. 40. Which digestive enzymes are secreted by the pancreas? Amylase, lipase and trypsin. So option B is correct. 41 नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं. 40 में लेक्टेज और माल्टेज तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है, जीजोनिम का काम है लेक्टोज और माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए. 41. Which structure carries bile from the liver and gallbladder to the duodenum? Common bile. Option C is correct. 41. 42. Insulin and glucagon are secreted by pancreas from its islets of Langerhans. Option C is correct. 43. The liver performs which of the following functions? Detoxify harmful substances. Option C is correct. Option C. 43 में option C. 44. What happens if the pancreas fails to produce insulin? Diabetes mellitus develops. Option B is correct. 45. Which of the following statement about the liver is false? 44 में B. G. The stuff the lesson. 45. 45. Which of the following statement about the liver is false? It produces digestive enzyme. 45 में option C is correct. 46. 46. What is the main function of the human circulatory system? They are involved to transport nutrients and oxygen throughout the body. So option B is correct. 46 में option B is correct. 47. Which chamber of the heart receive oxygenated blood from the lungs? Left atrium का काम है. So option C is correct. 48. The largest artery in the human body is aorta. Option B is correct. 49. Which prevent the backward flow of the blood in the heart? Valves का काम है. So option A is correct. 50. Which blood vessels carry blood away from the heart? Arteries का काम है. Option B is correct. 51. The pulmonary artery carries deoxygenated blood from the heart to the lungs. So option B is correct. 51. 52. Which part of the circulatory system is involved in the exchange of gases, nutrient and waste between the blood and tissue? Capillaries का काम है. So option C is correct. 52. C is correct. 53. The heart is divided into how many chambers? 4 chambers. So option C is correct. 53. Option C is correct. 54. The fluid portions of the blood that carries nutrients, hormones and waste is called plasma. 54 option A. 55 पे आते हैं. The left ventricle pump blood to the
whole body. So option B is correct. 55. Option B is correct. 56. Which part of the heart control the heart by sending electrical signal? SA node. So option C is correct. Sinoarterial node, जिसको pacemaker भी कहा जाता है. 57. Vein carry blood to the heart. So option B is correct. 58. Which blood vessels have the thinnest walls to allow exchange of the materials? Capillaries. 58 में हमारे पास है option C is correct. 59. What is the primary function of the lymphatic system? Remove excessive fluid from the tissue and fight infections. Option B is correct. 60. Which fluid circulates throughout the lymphatic system? Lymph. Option C is correct. 61 पे आती हैं. Which organs are the part of lymphatic system? Lymph nodes, spleen, and thymus. Option C is correct. 62. What is the role of lymph node? Filter lymph and trap pathogens. Option B is correct. 63. The largest lymphatic organ in the body is spleen. So option C is correct. 64. Which of the following is not the function of spleen? Producing insulin. तो ये किसका काम है? Pancreas का काम है. 65. The thymus is important for maturing T lymphocytes. Option B is correct. 65. Option B. 66. Lymphatic vessels eventually drain lymph into which part of the circulatory system? Subclavian veins finally blood के साथ mix हो जाता है. So option C is correct. 67. Which type of cell in the lymphatic system help against infection? Lymphocytes. Option C is correct. 68. The swelling of lymph nodes often indicates infection or immune response. Option B is correct. 69. Which of the following is not the lymphatic vessel? Lymph nodes. Vessels का part नहीं है ना. 70. Which substance does the lymphatic system absorb from the intestine? Fats and fat-soluble vitamins. Option C is correct. 71. Lacteal part है lymphatic system का. ये fats और ये चीजें absorb करता है. 71. What is the role of tonsils in the lymphatic system? Pathogen entering the mouth and nose. Option B is correct. और अगर जब भी infection हो जाए तो उसको tonsillitis कहते हैं. 72. Which of the following is true about lymph? It flow only toward the heart. Option C is correct. It flow only toward the heart. It is identical to plasma. Blood plasma के साथ similarity रखता है, सिर्फ protein difference है. Second, it contain large amount of, ये तो इसमें नहीं है, blood. और तीसरा, it flow only toward the heart. It is pumped by the heart. तो कहा है कि which of the following is true about lymph? Lymph के साथ क्या similarity, कौन सा treat जो है वो correct आ रहा है? So it flows only toward the heart. क्योंकि प्लाज्मा और lymph में difference ये है कि प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं और lymph में ये नहीं होते. So there is a difference between lymph and plasma. नेक्स्ट दिया हुआ है MCQs नंबर हमारे पास है 73. Lymphocytes are mainly produced in which of the following? Bone marrow and thymus. Option A is correct. 74. The process by which lymphocyte recognizes and respond to specific antigen is called immune response. Option B is correct. 75. What is the function of coronary artery? Supply oxygen-rich blood to the heart muscle by itself. Option B is correct. 76. Which of the following best describe the lymphatic system? As an open system that returns fluids into the blood. Option B is correct. 77. Which cells are primarily responsible for specific immune response? T cells and B cells. 78. What is the main function of the B cell in the specific defense system? Antibody production. Option B is correct. 79. Which molecule on the surface of T cell recognize specific antigen? T cell receptors पाए जाते हैं. Option C is correct. ET.
Which type of T cell is responsible for killing infected cells directly? Cytotoxic T cells. 81. The antigen presenting cells present antigens to which cells to activate specific immunity. ये हेल्पर T cells का काम है. ऑप्शन बी इज करेक्ट.